Good morning, sir. So in this today's lecture, we will continue with the cryptography, which we have discussed in the previous lecture. Clear? We have discussed the introduction of the cryptography, and actually, in your syllabus, basically, we have cryptography and network security. Yes. So on behalf of that content, so we initially start with the cryptography. We have discussed some points related to the cryptography. Clear? So now उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. Now we will continue onward. Clear? So I'm just sharing you a file. Wait. Just wait. I'm sharing you a file. Okay. So I think we all are audible properly. Is there any issue with the voice? So No, sir. okay. So we continue with the topic. Those who have new for me right now. So I just told them that we have discussed last time with the cryptography that deals with the net exactly how the communication is done in secured way. Clear? So we are just dealing to that. So क्रिप्टोग्राफी में हमने कल आपको थोड़ा सा पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्या हमने डिस्कस किया था. Okay, so we have discussed how the communication is done. Clear? Means secured communication is done. As we all know, whenever you doesn't take the security with the message that is transmitted, so you may lose there, or you are just compromised with the data that is transmitted from one end to another end. So to avoid the problem of losing that data by the hacking exactly. Clear? And if someone may modify your data in between the sender and receiver, that is just waiting for the message in between the transmission, and it can hack the data immediately. So to avoid this, इसी को हमने बताया था eavesdroppers or forgers, those who can exactly change that, modify the data. So you will just lose your data. Clear? So to avoid this problem exactly, we have some algorithm. सबसे हमने पहले क्या किया था, पहले मैंने आपको एक मॉडल बताया था कि क्रिप्टोग्राफिक मॉडल होता क्या है. सपोज वी हैव ए प्लेन टेक्स्ट. एक प्लेन टेक्स्ट मैसेज है जिसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं. क्लियर? एनक्रिप्ट कैसे करते हैं? थ्रू ए की. एक हमारे पास की होती है. की दो तरह की होती है, प्राइवेट की एंड पब्लिक की, या सिमेट्रिक की भी बोल सकते हैं हम, प्राइवेट की को. क्लियर? सो जो की होती है वो की हमारी सेंडर और रिसीवर दोनों को शेयर्ड होती है. क्लियर? द सेम की विल बी शेयर टू सेंडर एंड रिसीवर साइड. मतलब जो यूजर हमारा रिसीवर पे बैठा है, जो यूजर सेंड कर रहा है, दोनों के पास सेम की इंफॉर्मेशन होगा, by which they can unlock the message and by which they can log the message. लॉग भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं, लेकिन ये वही कर पाएंगे जिनके पास वो सेम की होगी. क्लियर? So if somebody has different key, so it cannot unlock the message. So this is the initial step before for the you can say this type of activity. Clear? So means cryptography में यही आपका main step है. We just secure the data with the basically. तो इसमें हमने आपको कुछ चीजें और बताई थी, जैसे पहले इंक्रिप्शन होगा सेंडर पे. इंक्रिप्शन से क्या होगा, जो भी प्लेन टेक्स्ट है
वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद क्या करते हैं हम, वो साइफर टेक्स्ट ही क्या है आपका, साइफर टेक्स्ट ही है जो एक तरह से उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया मैसेज आपका। क्लियर? एक मैसेज आपका दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मैसेज कंटेंट वही है बट प्राइवेसी, ड्यू टू प्राइवेसी इट इज जस्ट चेंज नाउ। क्लियर? सो उसमें हमने चेंज कर दिया एंड नाउ इट इज ट्रांसमिटेड। तो जब वो रिसीवर पे जाएगा तो रिसीवर पे क्या है, the same message will be converted into plain text through decryption method. Clear? And again it will be just unlocked by the user. Clear? So it is a plain, वहां पे क्या है, cipher text को plain text में convert कर देंगे receiver side पे with the same key. Clear? So exactly क्या होता है कि हम cryptography के algorithms use करते हैं ऐसा करने के लिए। ठीक है, we have some algorithm to encrypt the message and to avoid the problem of hacking. Clear? So now I'm just trying to share you the data. Okay, so I think it is visible to all of you. Yes, sir. Okay, so we are deal with the some cryptographic attacks like passive attack. Passive attacks में कल भी हमने थोड़ा बहुत आपसे बताया था इसके बारे में कि passive attacks क्या होते हैं. Passive attacks are in the nature of eavesdropping on or monitoring of transmission. So the goal of the opponent is to obtain information that is being transmitted. So passive मतलब जो गोल होता है उसका क्या होता है, जो अपोनेंट का है कि अब वो जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है वो उसको मिल जाए। ठीक है ना, यही इसका एग्जैक्टली गोल है। ठीक है ना. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, so release means a telephone conversation, an email message and a transferred file may contain sensitive or confidential information. So we would like to prevent the opponent from learning content of these transmission. जैसे आप फोन पे बात कर रहे हैं to someone and somebody in between you and the receiver, somebody just listening whatever you are communicating. Clear? So this is a type of what eavesdropping means एक तरह से कोई आपको बीच में मॉनिटर कर ले रहा है और आपकी वॉइस जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है that is recorded to somewhere else. So it is not a type of what proper communication. Clear? So इसमें इंफॉर्मेशन हैक हो रहा है. ठीक है ना. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ट्रैफिक एनालिसिस. क्लियर? So if we had encryption protection in place, an opponent might still be able to observe the pattern of the message. देखिए ये भी है, अगर आपने इंक्रिप्शन प्रोटेक्शन को लगा रखा है तब भी कोई अपोनेंट might be still able to observe the pattern of the message. So the opponent could determine the location and identity of the communication to host and could observe the frequency and length of the message being exchanged. Clear? मीन्स जो अपोनेंट है वो डिटरमाइन कर सकता है लोकेशन एंड द आइडेंटिटी ऑफ द कम्युनिकेशन होस्ट एंड कुड ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ द मैसेजेस बीइंग एक्सचेंज, जो भी एक्सचेंज हो रहा है. सो पैसिव अटैक्स आर वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बिकॉज दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी ऑल्टरनेशन ऑफ डेटा. क्योंकि एग्जैक्टली क्या है, इट डज नॉट इन्वॉल्व विद द ऑल्टरनेशन मीन्स चेंजिंग ऑफ डेटा में कोई इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. So, however, it is feasible to prevent the success of these attacks. होने से पहले आप इसको अटैक को रोक सकते हैं. Now we have active attack. आप रोक सकते हैं लेकिन अगर हो गया तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. So this is all about the passive attack now. So we have now active attacks. Active attack में क्या होता है? These attacks involve some modification of the data stream or the creation of a false stream. So these attacks can be classified into 4 categories. अब आप देख सकते हैं ये जो एक्टिव अटैक होते हैं इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रीम हो जाता है और द क्रिएशन ऑफ ए फॉल्स स्ट्रीम, कुछ उसकी जगह पे कोई और डेटा आ जाएगा. ठीक है ना. दिस इज अ टाइप ऑफ एक्टिव अटैक्स. सो दीज अटैक्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज व्हाट, masquerade means one entity
pretends to be a different entity. ठीक है, जो एक एक एंटिटी होगी वो कुछ ऐसा बहाना करेगा कि वो दूसरा एंटिटी है, ठीक है ना। सो वन एंटिटी प्रिटेंड्स टू बी ए डिफरेंट एंटिटी, ठीक है। रिप्ले क्या होगा, रिप्ले में क्या होगा, इन्वॉल्व्स पैसिव कैप्चर ऑफ ए डेटा यूनिट एंड इट्स सब्सिक्वेंट ट्रांसमिशन टू प्रोड्यूस एन अनऑथराइज्ड इफेक्ट। देन मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज की बात करें तो some portion of the message is altered or the messages are delayed or recorded to produce an unauthorized effect. Clear? If we talk about the denial of service, so it prevents or inhibits the normal use or management of communication facilities. Clear? So another form of service denial is the disruption of an network, basically of an entire network, either by disabling the network or overloading it with the message so as to degrade performance. Clear? Now, we have discussed later on with the symmetric and public key algorithm. So you can see encryption and decryption method fall into two categories. This is very important. That is, one is the symmetric key and the second one is the public key. Are you getting my point? All of you are getting my point? Yes, sir. Okay. Symmetric key, आपने अभी attacks पढ़े, passive attack and active attacks. Now we have two types of key algorithm basically. First one is the symmetric key algorithm and second is the public key algorithm for encryption and decryption method. So in symmetric key में क्या होता है, the encryption and decryption keys are known both to sender and receiver. सिमेट्री का मतलब ये है कि जो भी की है वो दोनों साइड से सिमेट्रिक है, मतलब दोनों तरफ सेम की हमारी ट्रांसमिट हो रही है, तो इट इज ए टाइप ऑफ सिमेट्रिक की. सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर knowing to each other with the same key. Clear? And the encryption key is shared and the decryption key is easily calculated from it. In many cases the encryption and decryption keys are same. In public key cryptography में क्या होता है, जो सिमेट्रिक की है इसको हम प्राइवेट की भी बोल सकते हैं, ठीक है। पब्लिक की में क्या होता है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में एनक्रिप्शन की इज मेड पब्लिक, जिससे हम एनक्रिप्ट करते हैं वो तो पब्लिक होता है, बट इट इज कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फाइंड द डिक्रिप्शन की विदाउट द इंफॉर्मेशन नोन टू द receiver. But it is computationally infeasible to find the decryption key without the information known to the receiver. Clear? So you can say this is how a model exists for the network security. Clear? So we have a message. Clear? And then apply the secret key. Yeah, secret information is there. Yes, information related to this means you are just encrypted that message. So message will be secured now. So इसी को cipher text बोल सकते हैं. This is plain text. This is cipher text. Now it is communicated through the channel. So information channel is there. Now the message is received on this side. That is again the cipher text. Now the receiver will have if suppose it have the same key, so it will decrypt that message, and then this same message means cipher text will be converted into again plain text. So you are communicating with plain text with the plain text, but in between the channel we are communicating the cipher text. Clear? So this is the sender, this is the receiver. So this is a generalized model. So opponent कहाँ पे आ सकता है, opponent या आपका यहाँ पे कोई हो सकता है जो चैनल के अंदर कोई इंटरप्ट कर सकता है मैसेज को ऑल्टर्ड करने के लिए. क्लियर? बाकी ये दोनों आपके ट्रस्टेड पार्टीज हैं, सेंडर एंड रिसीवर. क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. So this is exactly the prototype or model for the we can say cryptographic system. So this is how the communication is done in cryptography. Clear? Yes, sir. Okay, so if somebody have any question, they may ask. Otherwise, I continue. Till now, if somebody have any queries, they may ask. Otherwise, I may continue. No, no, sir. Is there any query, or I may continue?
क्लास आवाज आ रही? हेलो, कोई क्वेरीज तो नहीं है किसी को? नो सर। ओके, till this point it is all about is it is clear all about, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? यस सर। ओके, so this is how the uh, communication is done. It is given over here, so you can say the communication protocol जो हम लोग यूज कर रहे हैं बेसिकली टीसीपी आईपी यूज हो रहा है by the two peripherals, clear? और जो information channel है that is logical information channel is there. This is the logical information channel, clear? Now if we talk about using the model requires us to, so we have a suitable algorithm for the security information, design a suitable algorithm for the security information, then generate the secret information keys used by the algorithm. Then we have a we develop a method to distribute and share the secret informations, clear? अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे how the model for network security is there, network access security. So you can say that may be a human or crime. Then gatekeeper function is there and information system is there. So this model is somewhere like bird type. So थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. So select appropriate gatekeeper function to identify users. जो भी gatekeeper appropriate gatekeeper functions है ये identify करता है user को. Implement security controls to ensure only authorized user access designated information or resources. Clear? यस सर। So if we talk about the trusted computer system, it can be used to implement this model. मेरी आवाज सभी को आ रही है clearly? Am I clear to all of you? Am I clear to all of you? यस सर। Okay, just wait. Okay. So conventional encryption we are using is what? देख सकते हैं आप referred conventional means private key, single key जिसको भी हम बोल सकते हैं, ठीक है? Private key is the single key. Sender and recipient share a common key. ठीक है, दिस इज अ कन्वेंशनल इंक्रिप्शन मेथड जिसमें क्या होता है कि जो हमारा बेसिकली जो की शेयर्ड होती है वो सिंगल की होती है जिसको हम सिमेट्रिक की भी बोलते हैं बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है? सेंडर एंड रिसिपेंट शेयर ए कॉमन की, ये बता दिया मैंने आपको. इसके बाद जो है इफ यू टॉक अबाउट सो क्लासिकल एनक्रिप्शन एल्गोरिथम आर द private keys was only typed prior to 1870s. Clear? टेस्ट आप सभी को पता है क्या होता है. साइफर टेस्ट इज द कोडेड मैसेज. साइफर क्या होता है? एल्गोरिथम फॉर ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट. कुछ टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए. जैसे साइफर टेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो साइफर टेक्स्ट इज द कोडेड मैसेज जिसको हमने कोड कर दिया है. नॉर्मल मैसेज नहीं रह गया वो. एक प्लेन टेक्स्ट होता है, एक साइफर टेक्स्ट होता है. प्लेन टेक्स्ट आपका ओरिजिनल मैसेज होता है जो आप टाइप करते हैं या कंपोज करते हैं, और साइफर टेक्स्ट इज द कोडेड मैसेज जो की लगाने के बाद आता है, ठीक है? उसके बाद साइफर क्या होता है? साइफर एक एल्गोरिथम है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट. की आप लोगों को पता है की इज यूज्ड इन साइफर नोन ओनली टू सेंडर रिसीवर. इन एन साइफर क्या होता है? एन साइफर को एनक्रिप्ट भी बोल सकते हैं, डी साइफर को डिक्रिप्ट भी बोल सकते हैं. एन साइफर का मतलब होता है कन्वर्टिंग द प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, इसको हमको एनक्रिप्शन भी बार बार बोल रहे हैं. डी साइफर क्या होता है? दिस इज द डिक्रिप्शन, basically recovering cipher text from the plain text.
ये जस्ट अपोजिट है जो आपका करेगा। देन वी हैव ए क्रिप्टोग्राफी। Cryptography is the study of encryption principles oblique method. And what is cryptoanalysis? This is another term. Cryptoanalysis क्या होता है? It is also known as code breaking. ये बहुत पेपर में पूछा जाता है. What do you understand by cryptoanalysis? Clear? Cryptoanalysis is what? A type of code breaking. The study of principles oblique methods of deciphering cipher text without knowing key. Without knowing key. Clear? Cryptology is what? The field of both cryptography and cryptoanalysis is called cryptology. So you can see how the communication is done. Is the diagram is clear to all of you? So I think the diagram will be visible. Yes, sir. So this is, you can see how the plain text is converted into ciphertext, and again the ciphertext is converted into plain text. So this is what the diagram is there. So in this diagram you can see we have a plain text now in the sender side. And the plain text is just applying through some secret keys shared by the sender and recipient. So key you can see, this is the key. Clear? It is applying on this plain text, and then the message is encrypted basically. And we are also using some encryption algorithm. जैसे कुछ algorithm है, आपको बताएंगे RSA algorithm. ठीक है, AES is also there. So ये algorithms भी हम लोग तो देखेंगे. Then it is converted into what? Transmitted cipher text. ये आपका cipher text में convert हो गया, which is transferring now. Plain text अब cipher text में convert हो गया, ठीक है ना? So इसके बाद अब ये जो आप देख रहे हैं k, x लिखा हुआ है. k, x का मतलब x was the plain text. इस प्लेन टेक्स्ट को आपने की से इनक्रिप्ट कर दिया, मतलब की लगा के इसको सिक्योर कर दिया, तो दैट्स व्हाई इट इज ए की इज देयर. सो के इज मेंशन हियर एंड ई इज स्टैंड्स फॉर द एनक्रिप्शन. तो y इज इक्वल टू ई ब्रैकेट में k कॉमन x लिखा हुआ है. x इज द ओरिजिनल मैसेज, k का मतलब उसके साथ की अटैच हो गया है, की लगाने से मैसेज आपका थोड़ा मॉडिफाई हो गया है. एंड e इज व्हाट? एनक्रिप्शन, जो बाहर e दिख रहा है, ठीक है. नाउ इट इज गोइंग टू द रिसीवर साइड. रिसीवर पे फिर से सेम की आपकी अवेलेबल है, यही की यहाँ पे भी अवेलेबल है, जो इस सेम फिर साइफर टेस्ट को प्लेन टेस्ट में कन्वर्ट कर देगा अगेन, ठीक है, डिक्रिप्शन मेथड के थ्रू. so this is a reverse of encryption algorithm. So you can see here x is equal to dk comma y. y क्या है? y आपका मैसेज जो रिसीव हो गया, ठीक है. k क्यों लगा है? k अगेन की इज अप्लाइंग ओवर हियर, एंड d इज व्हाट? d is the decryption. E is the encryption, D is the decryption. तो receiver side decryption हो रहा है, तो so we are having D outside the bracket. Clear? Is it clear? This diagram is clear? Yes, sir. Okay, so this is very important diagram. जब भी आपका क्रिप्टोग्राफी पूछा जाएगा, तो you will draw this diagram. ये आपको बनाना होगा, ये ध्यान रखिएगा. तो क्रिप्टोग्राफी इज इम्पोर्टेंट टॉपिक. सो जब एग्जाम में आएगा तो आप you will draw this diagram. Clear? So now आप यहाँ देख सकते हैं, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो अभी हमने आपको बताई हैं, ठीक है. सो इस कंटेंट को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. नाउ वी आर हैविंग, देख सकते हैं, टू रिक्वायरमेंट्स फॉर सिक्योर यूज ऑफ सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन. ए स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, एक सीक्रेट की नोन ओनली टू सेंडर एंड रिसीवर. ये देख सकते हैं, यही जो E इज इक्वल टू ई के एक्स लिखा हुआ है एंड डी के वाई लिखा हुआ है, ये वही है एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन विद द की, ठीक है. अब यहाँ पे इन्होंने कैसे मतलब उसी को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है. जैसे मान लीजिए एक सोर्स है, एक मैसेज को प्रोड्यूस कर रहा है प्लेन टेक्स्ट में, दैट इज ये आपका मैसेज है, x इज इक्वल टू x1 x2 xm तक, मतलब कोई भी कंटेंट है. m इज द नंबर ऑफ द लेटर्स इन द मैसेज. सो ए की ऑफ द फॉर्म k इज इक्वल टू k1 से kz, ये की है जो कि जनरेट की गई है. If the key is generated at the source, then it must be provided to the destination by means of some secure channel. अब मान लीजिए विद द मैसेज x, इंक्रिप्शन की आपने k एज ए इनपुट लगा दिया, ठीक है. सो द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम फॉर्म द साइफर टेक्स्ट
साइफर टेक्स्ट में क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू y1 से लेके yn, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज y इज इक्वल टू e के एक्स। तो जो x आपका प्लेन टेक्स्ट था दैट इज कन्वर्टेड इनटू द साइफर टेक्स्ट y नाउ, एंड y इज इक्वल टू e के एक्स, मतलब एक e का मतलब एनक्रिप्शन हो गया है k की अप्लाई करने के बाद प्लेन टेक्स्ट पे। तो अब ये पूरा मैसेज एज ए y काम कर रहा है जो कि पहले x था। क्लियर? नाउ जब ये रिसीवर पे गया तो रिसीवर क्या करेगा, इस y को फिर से x में कन्वर्ट करेगा। तो द इंटेंडेड रिसीवर इज पॉसिबल, वो पोजीशंस ऑफ द की इज एबल टू इन्वर्ट द ट्रांसफॉर्म। तो इसको इन्वर्ट करेगा क्योंकि हमें तो x पता है ना, y से क्या मतलब, y तो ट्रांसमिशन का पार्ट है सिक्योर करने के लिए। तो हमें x लेने के लिए हमने फिर से इसको इस e को डिक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, ये जो y हमें था साइफर टेक्स्ट y, इसको प्लेन टेक्स्ट बनाने के लिए y पे हमने डिक्रिप्शन लगा दिया विद द सेम की। वी हैव अप्लाइड d के ब्रैकेट में y, और फिर से हमको अपना ओरिजिनल मैसेज x मिल गया जो हमने ट्रांसमिट किया था। तो दिस इज हाउ द receiving of the message is done. I think it is clear to all of you. I think it is clear to all of you. Yes, sir. So this is how the encryption and decryption is done. So okay, Shweta Shukla is there. Shweta Shukla, are you there? Are you listening to me? Shweta, are you listening to me? Somebody are not responding actually. Is they are present or absent? Still, they are attending the classes, but no response from this side. Yes, Okay. With this, Shweta is there. yes, sir. Okay, so now, okay. Thank you. Uh, we have a classical encryption techniques. So we have some encryption techniques like substitution and transposition. Basically, we are having two basic building blocks of all encryption techniques. पहला है substitution and then transposition. So ये important है, clear? अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि where मतलब कैसे ये पहली बार हमारा कब मैसेज कन्वे किया गया था, सिक्योर्ड मैसेज, तो कैसे हुआ था, किसने किया था, somebody, किसी ने बताया, कोई किसी को पता है पहली बार ये जब पिक्चर में आया कि हाउ वी कैन सेंड द ये आइडिया आया? कैन एनीवन एक्सप्लेन हाउ वी कम टू नो अबाउट द सिक्योर्ड मैसेज ट्रांसमिशन? हेलो? It is somewhere related to a person that belong to Rome. Clear? Rome में एक person था सीजर नाम का, which uses the cryptographic type of system. Clear? वो क्या करता था कि जैसे कोई भी जैसे मैसेज को भेजता था तो उसका कीवर्ड चेंज कर देता था। ठीक है, जैसे हम लोग आज के समय में की बात करते हैं, की है मतलब हम लोग डिजिटल मीडिया की बातें कर रहे हैं। उस समय पे ऐसा कुछ नहीं था, तो वो उसकी लैंग्वेज को मॉडिफाई कर देता था। And the receiver is also intended with the same content जिसको वो भेज रहा है, तो उसको भी उस मॉडिफिकेशन के बारे में पता होता था। ठीक है ना? तो उस मॉडिफिकेशन को वो उस अपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता था। इट इज अंडरस्टूड टू बोथ सेंडर एंड रिसीवर about the modification of the message and what is the original content where if you decrypt that message. So वहां से ये आइडिया आया, that is what cryptography. Clear? Is it clear? Yes. Okay. So now we have a classical encryption techniques, that is substitution and transposition. The substitution is what? A substitution technique is one in which the letters of the plain text are replaced by other letters or by numbers, or we can say by a number of symbols. Substitution में क्या होता है? लेटर और प्लेन टेक्स्ट को रिप्लेस कर देते हैं
हम किससे, ये सब एन्क्रिप्शन टेक्निक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लासिकल एन्क्रिप्शन टेक्निक्स, जिसमें पहला आपका सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है, जिसमें हम कैसे उसको एन्क्रिप्ट करते हैं। तो पहला मेथड ये है कि जो भी प्लेन टेक्स्ट हमारे पास है उसको हम लेटर्स को मॉडिफाई कर देते हैं दूसरे उससे, ये और बाई नंबर्स और बाई सिंबल्स। तो जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखा हुआ है, हमने ए को फिर नंबर बना दिया, ए को हमने इनक्रिप्ट कर दिया, कोई नंबर दे दिया, ए को 4 दे दिया, 5 दे दिया, या कोई सिंबल से हमने उसको रिप्लेस कर दिया, मतलब मीनिंग वही रहेगी, बस उसका रिप्लेस कर दिया, जिससे वो मैसेज हमारा एक तरह से सिक्योर्ड वे में ट्रांसमिट हो सके, ठीक है ना, कोई दूसरा उसको समझ ना पाए। So if the plain text is viewed as a sequence of bits, then substitution involves replacing plain text bit pattern with cipher text bit pattern. So this is also known as cipher text bit pattern if you modify the content of that. Clear? Now Caesar cipher, we have a Caesar cipher or shift cipher is there. So earliest known use of a substitution cipher and the simplest way of Julius Caesar, जो भी मैं आपको बता भी रहा था. The Caesar cipher involves replacing each letter of the alphabet with the letters standing 3 places further down the alphabets. Are you getting my point? तो Caesar ciphers ने क्या किया था, इसमें क्या होता है कि इसको शिफ्ट साइफर भी बोलते हैं। इसमें एग्जैक्टली हमारा जो भी प्लेन टेक्स्ट है, मैसेज है, उसमें अल्फाबेटिकल मैसेज, उसको हम जैसे मान लीजिए ए है तो ए को हम थर्ड डिजिट आगे तक लेके जाएंगे, मतलब ए से बी सी डी, जो थर्ड डिजिट आएगी ए के बाद उसको हम रिप्लेस करेंगे ए से, ठीक है, या थर्ड अल्फाबेट जो आएगा। तो जैसे हमारा ए है, ए को हम डी से रिप्लेस कर देंगे, तो एक तरह से मैसेज हमारा चेंज हो गया। आप देख सकते हैं वी हैव ए प्लेन टेक्स्ट लाइक पे मोर मनी, सपोज हमें ये किसी को भेजना है पे मोर मनी, तो हम इसको कैसे चेंज कर दिए, पी को हमने थर्ड लेटर से रिप्लेस कर दिया, पी के बाद आपका थर्ड लेटर एस आएगा, उसके बाद पी क्यू आर एस, ए के बाद डी आएगा, ए के बाद डी आ गया बी सी डी, ठीक है, तो जो थर्ड थर्ड पोजीशन है उससे हमने रिप्लेस कर दिया। तो दिस वाज द इनिशियल मेथड व्हिच इज फॉलोइंग। तो इस तरह से हमारा ये साइफर टेक्स्ट बन गया। अभी अब ये जो पे मोर मनी है वो हमारा इस तरह से कन्वर्ट हो गया, ठीक है, लेकिन रिसीवर विल आल्सो इंटेंडेड टू डिक्रिप्ट दैट। क्लियर? इज इट क्लियर? So for each plain Yes, text yes, letter P, exactly substitute the ciphertext letter C such that, so यहाँ देख सकते हैं this is how it is converted. C is equal to, C is the ciphertext, C is equal to E encrypt plain text, P का मतलब plain text is equal to P plus 3, जो भी plain text है या जो भी अल्फाबेट है plain text का, उसको हम 3 उसको आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना, प्लस 3 कर रहे हैं उसमें। तो देखिए P को S बनाया तो इसमें एक 3 ऐड हो गया, देन mod 26 is there. Clear? So a shift may be any amount so that general Caesar algorithm is C is equal to EP, ये जनरलाइज वे है के यहाँ पे कोई भी अमाउंट का शिफ्ट हो सकता है। अभी हम 3 से कर रहे हैं, आप और भी बढ़ा सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। के इज द जनरलाइज्ड टर्म। तो एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या हुआ, C is equal to encryption of plain text is equal to plain text plus cryptography key mod 26। क्लियर? के की वैल्यू आप 1 to 25 ले सकते हैं, जितने हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स हैं, तो उसमें आप कोई कहीं तक आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। डिक्रिप्शन में क्या होगा, प्लेन टेक्स्ट इज इक्वल टू डिक्रिप्शन ऑफ द साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू सी माइनस की, पहले जितना आप ऐड कर रहे हैं उतना ही रिसीवर साइड पे माइनस करना पड़ेगा, तभी डिक्रिप्ट कर पाएंगे। जैसे अगर ए को हमने डी बनाया है इंक्रिप्शन वाले साइड पे, तो डी से ए लाने के लिए हमें उतना माइनस करना पड़ेगा रिसीवर साइड पे। तो वी विल जस्ट माइनस दैट कंटेंट विद द mod 26। क्लियर? mod 26 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वी आर हैविंग 26 अल्फाबेट्स। क्लियर? yes, sir. नाउ वी हैव ए प्ले फेयर साइफर। प्ले फेयर साइफर में क्या होता है, दिस इज द अनदर वे ऑफ साइफरिंग या encrypting द मैसेज। The Playfair cipher is what? The best known multiple letter encryption cipher is the Playfair, which treats diagram in the plain text as simple units and translate these units into ciphertext diagram. Clear? So the Playfair algorithm is based on the use of
5x5 matrix. This is another way of encryption the message that is plain text. It is a type of matrix formation of the letters. That is a 5x5 matrix of letters constructed using a keyword. So let the keyword be जैसे keyword आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे ये देखिए monarchy. So the matrix is constructed by just filling in the letters of the keyword, and that is minus duplicate from left to right and from top to bottom, and then filling in the remainder of the matrix with the remaining letters in the alphabetical order. So we will see that, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से कुछ रहता है. ठीक है, आर यू गेटिंग? Yes, sir. देखिए, this is how the matrix is there, 5x5 matrix is there. So suppose we have a monarchy आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है monarchy. So it is just converted into another form. Clear? So this is following just by this conditions, ये conditions हैं जिससे ये follow हो रहा है, कैसे हम इसको convert कर रहे हैं. ठीक है, so exactly what we are doing, we are exactly the best known multiple हम क्या कर रहे हैं, play fair method use कर रहे हैं, जिसमें हम जैसे आप पजल्स होती हैं, पजल्स यू ऑल नो अबाउट द क्रॉसवर्ड पजल्स टाइप. सो पजलिंग में क्या करते हैं, हम ऐसा ही कुछ करते हैं कि हम जो भी मैसेज है उसको डिफरेंट डिफरेंट वे से हम रोटेट कर सकते हैं. ठीक है, नंबर्स को या जो भी हम इसको चाहें तो किसी भी फॉर्म में रोटेट करके उसकी मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू सम पजलिंग टेक्निक्स. क्लियर? so the data will be puzzled. Are you getting? The data will be puzzled. सभी को समझ में आ रहा है जितना पढ़ाया मैंने? हेलो क्लास? जी सर. अभी तक जितना हमने बताया उसमें समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर. इस सिद्धांत के अलावा कोई और? No, sir. No, sir. Actually, I am not getting any kind of queries from your side. Queries नहीं है. Hello? We don't have any queries. Is there any queries related to sir. this? किसी को अभी तक कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, क्योंकि देखिए टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है. इफ यू आस्क समथिंग then you will understand more your concept will be more clear, because these types of topics are related to information security in general. Clear? So okay, so ये देख सकते हैं आप. बेसिकली इस एल्गोरिथम में फिर से बता देता हूँ. इस एल्गोरिथम में 5x5 की मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं. ठीक है, of letters constructed using a keyword. Let the keyword be constructed by filling in from left to उसका duplicates word. ठीक है, and then filling letters in alphabet देते हैं. Let text is encrypted. रखिएगा I and the letters I and J time according to the